move our next topic, that is speed. Now when we talk about speed, so speed is how fast something is moving. मतलब स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है. This defines the speed of that object. Now consider these two cars. Let's consider their motion. नाउ अगर हम इनकी मोशन को कंसीडर करें तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ कार 1 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कार 2. रीजन इज दैट, कैसे हमें पता चला? बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड कि स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग. सो वी हैव जस्ट ऑब्जर्व कि कार 1 इज मूविंग फास्टर एज कंपेयर टू कार 2. इट मींस के कार 1 की जो स्पीड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कार 2. नाउ अब हम आते हैं इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्पीड. देखिए प्रीवियस एग्जांपल में सिर्फ हमने ये बताया था, ये हमने कंक्लूड किया था कि कार 1 की स्पीड ग्रेटर है. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट, बिकॉज स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट. अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड यू रिक्वायर टू क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसकी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी. प्लस यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, मतलब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है. सो दीज आर द टू क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्पीड. अब स्पीड हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दीज क्वांटिटीज? जस्ट बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम. मीन्स कि अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी हो सो वील कैलकुलेट इट बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस विद द टाइम टेकन. वील गेट द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम आते हैं द सेम एग्जांपल वी कंसीडर्ड कि अगर दो कार्स हैं, दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स. अब हम इनकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं. लेट्स से the total length of the path on which these cars are moving is the 400 meters. ठीक है, ये हो गया total length. Now as car 1 is moving with the faster speed, so let's say it takes 20 seconds to complete this path. Same like car 2 which is moving a bit slower as compared to the car 1, so it might be possible, let's assume that it might have taken 30 seconds to complete the journey. अब हम फाइंड करते हैं इनकी स्पीड. सो नाउ कार 1 की अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें सो दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एंड द टोटल डिस्टेंस इज 400 एंड टोटल टाइम इज 20 seconds. सो वी विल गेट स्पीड 20 meters पर सेकेंड. मीटर्स पर सेकेंड हमें कैसे पता चला? डिस्टेंस इज मीटर्स एंड टाइम इज सेकेंड्स, सो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर्स पर सेकेंड्स. इसी तरह इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार 2, so that will be total distance, that is 400 meters, and the time it is taken 30 seconds, so we'll get a speed of car 2 that is 13.33 meters per second. So now from these calculations again we can see that speed of car 1 is greater than the speed of car 2. Now, as we have just discussed, we have calculated speed in meters per second. Let's see what are the different units in which we can calculate speed. So now if you want to calculate in speed, so the जो speed को calculate करने का जो ऐसा unit है, that is meters per second. Remember this thing, meters per second is the SI unit of speed. But this speed can also be calculated in other units, and what are those units? It can be miles per hour or it can be kilometers per hour. Means के depending on the situation कि आपको distance किस unit में given है और time किस unit में given है, you can calculate that speed in different units. Okay. Now again consider these two examples. अब हम थोड़ा सा further discuss करते हैं about the speed. Now just consider the motion of car 1. अगर आप मोशन ऑफ कार 1 को ऑब्जर्व करें तो दिस कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो कार 1 है इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, और इसकी जो स्पीड है वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड दैट इज 20 meters per second. तो ये जो 20 meters per second है, सो दिस कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब थ्रू आउट द जर्नी ये कार जो होगी 20 meters per second की स्पीड से ट्रेवल कर रही है. नाउ ये जो 20 meters per second स्पीड है, इट्स अ कांस्टेंट स्पीड,
दैट मीन्स ये कांस्टेंट स्पीड से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन एवरी सेकेंड कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। 20 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब है इन एवरी सेकेंड दिस कार has traveled a distance of 20 meters. So because its speed is constant, so for every second इसका जो covering distance होगा वो भी same होगा. तो this is what we can conclude about motion of car 1. Now consider the motion of car 2. अब देखिए अगर आप कार 2 की मोशन को कंसीडर करें, प्रीवियसली इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी, सम विद सम स्पीड, उसके बाद उसने थोड़ा सा रेस किया, अगेन इट हैज स्टार्टेड मूविंग विद सम अदर स्पीड. सो अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करें, लेट्स से ओवरऑल वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू. ठीक है ना बेटा, अगर हम ओवरऑल इसके डिस्टेंस को इसके टाइम से डिवाइड करें, लेट्स से अगेन इट्स टेकिंग 20 सेकंड्स टू कंप्लीट जर्नी, और अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करें तो वी आर अगेन गेटिंग 20 मीटर पर सेकंड. बट कैन वी से this speed is constant? No. रीजन इज दैट अगर हम कार 2 की मोशन को कंसीडर करें, इट्स नॉट सेम एवरीवेयर. कहीं पर स्पीड कम हो रही है, कहीं पर वो स्टॉप कर रही है, कहीं पर इंक्रीज हो रही है. सो एक्चुअली दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो. देखिए जब आप लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर स्पीड कांस्टेंट. समटाइम्स आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, समटाइम्स आपको स्टॉप करना पड़ता है, समटाइम्स योर स्पीड इज डिक्रीज्ड. सो इट मींस के यू कीप चेंजिंग योर स्पीड while moving for the longer journeys. So it's very difficult to measure speed at each and every point. देखिए ना, अगर इस केस में क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीड वेरी कर रही है. सो अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहें, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कैलकुलेट करें, हाउ मेनी टाइम्स इट चेंज. सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए what we do for the longer journeys, we instead of taking speed at different points, we take an average speed. मतलब उस केस में हम क्या करते हैं, स्पीड को हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं. सो इट मीन्स के फॉर द लॉन्गर जर्नीज इट इज प्रेफर्ड टू टेक एन एवरेज स्पीड. अब ये एवरेज स्पीड होता क्या है, लेट्स डिस्कस इट. अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, we have to divide the total distance with the total time. मतलब जो total distance होगा, अगर हम उसको total time से divide कर दें, तो we'll get average speed. मतलब previous case में जो object 2 की जो speed थी 20 meters per second, that can be the average speed of that car 2. Okay. Now consider some examples. अब हम थोड़ा average speed को calculate करते हैं using few examples. A car takes 1 hour to travel 100 kilometers along a main road. Means के car है which is traveling means के which is taking traveling a distance of 100 kilometer, और इस 100 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करिए, in 1 hour on the main road, and then half hour to travel 20 kilometers along a side road. It means that now it has taken it has started moving on the side road, और side road पे जो total distance वो travel करिए 20 kilometers, और वो कितने time में complete करिए, half hour में. Now we have to find it's the average speed of the whole journey of the car. मतलब अपने कार की average speed calculate करनी है. Now as we have discussed कि average speed is the total distance divided by total time. So total distance is 100 plus 20, it means के 120 kilometers, and the average and the total time it has taken, that is 1 hour plus half hour, it means that is 1.5 hours. So that is average speed of the car is 80 kilometers per hour. So this is how we calculate the average speed for different objects. Now we use a magic triangle, or we call it as a speed triangle. अब स्पीड ट्राइंगल का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि देखिए, इफ वी लुक फॉर द फार्मूला ऑफ स्पीड, सो इट इन्वॉल्व्स स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. इट मींस इट इन्वॉल्व्स 3 फिजिकल क्वांटिटीज. सो समटाइम्स वी डायरेक्टली हैव टू कैलकुलेट स्पीड, बट समटाइम्स ऐसे होता है हमें स्पीड गिवन होती है, लेट्स से वी आर गिवन स्पीड एंड टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल. और समटाइम्स ये होगा कि हमें स्पीड और डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन गिवन हो एंड वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन. इट मींस के वी कैन we can be asked to find out any of the physical quantity. So अगर हमने इनको अरेंज करना हो कि अगर हमने इनमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो how our formula will be arranged, so that for that purpose we use स्पीड ट्राइंगल. ये जो स्पीड ट्राइंगल होता है इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी. अब इस स्पीड ट्राइंगल में देखें, वी हैव 3 वेरिएबल्स d, s एंड t.
D stands for distance, S for the time, S for the speed and T for the time. अब हम आते हैं इस ट्राइंगल को हम यूज किस तरह करेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, जिस भी क्वांटिटी को आपने कैलकुलेट करना है, पुट योर थंब ओवर दैट क्वांटिटी एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप इन बिटवीन रिमेनिंग क्वांटिटीज. मतलब आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस क्वांटिटी को आपने कैलकुलेट करना है, जब उसके ऊपर आप थंब प्लेस कर देंगे, देन फाइंड आउट द रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें, दिस लाइन इज consider it as a division and consider this vertical line as multiplication. Now you will have an idea कि हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे. Now for example, हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड. So just put your thumb over the speed. तो देखें, जब आप स्पीड के ऊपर थंब रख देंगे, now as this horizontal line is considered as division, so now your relationship is speed equals to distance divided by time. So this is how you calculate speed. Similarly, if you want to calculate distance, so देखिए, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने डिस्टेंस के ऊपर थंब प्लेस कर दिया. जब आपने डिस्टेंस के ऊपर थंब प्लेस किया, अब अगर आप रिलेशनशिप फाइंड करें स्पीड और टाइम में, सो दिस वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लिकेशन, सो डिस्टेंस विल बी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. Same like if you want to calculate time, that will be distance divided by speed. So this is how we use this magic triangle to find out the unknown quantity out of these three quantities. Okay, so let's solve some examples using this speed triangle. Now consider the first example. A man crosses a road 8 meters wide at a speed of 2 meters per second. How long does the man takes to cross the road? It means that in this example, you are given total distance, that is 8 meter, and the speed, that is 2 meters per second. You have to find out how much time it will take to cross the road. It means that you have to find out the value of time. So just put your thumb over the time, then find out the relationship, that is time equals to distance divided by speed. So we have values and get an answer, that is 4 seconds. Now there is one more example. A child is standing on the platform of a station watching the train. A train traveling at 30 meters per second takes 3 seconds to pass the child. What is the length of the train? Now in this question, you are given speed, that is 30 meters per second, and the time, that is 3 seconds. And you have to find out what is the total length, means that you have to find out the distance. So again, just you put your thumb over the distance, then the relationship between speed and time is that they are multiplying. So just put the values and get an answer of distance, that is 90 meters. Now, if you talk about the speed, this is a scalar quantity because the questions we have solved for the speed, कहीं पे भी हमने questions के अंदर direction को include नहीं किया. We have only calculated the magnitude only. That means के speed is a scalar quantity which involves magnitude only. This does not involve the information of direction. अब आते हैं, as we have discussed the speed, now we'll see okay, what are the different types of speed. Now consider the motion of this car. If you just observe the motion, car is moving at the same speed throughout the journey. So if any object is moving with the same speed throughout the journey, that speed is called uniform speed, or it's called the constant speed, or it is also called steady speed. These all terms are used for the same purpose. अब ये constant speed का मतलब क्या होता है? If object covers equal distance in equal amount of time or equal distance per unit time, that speed of the object is called a constant, uniform or steady speed. Or we can say that if the magnitude, because in speed we only include the magnitude, if that magnitude remains same, that speed is called a constant, uniform or steady speed. Now on the other hand, consider the example of this car number 2. So you can clearly see that initially car was moving with some speed, then it has taken some rest, and again it has started moving with some different speed. That means कि इस कार की जो speed है, that is not same throughout the journey. So this speed is called a variable or a non-uniform speed.
और ये वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ वेरिएबल डिस्टेंस, मींस के डिफरेंट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेट्स से अगर फर्स्ट सेकंड में इट्स कवरिंग 2 मीटर, इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट सेकंड में वो 4 मीटर कवर करे। दिस वे if different distance is covered per unit time, so that speed is called a variable speed। और वेरिएबल स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इफ द मैग्नीट्यूड डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी, तो वो स्पीड होगी वेरिएबल स्पीड। ओके, नाउ वेरिएबल स्पीड कैन हैव फर्दर टाइप्स। किस तरह? देखिए, कांस्टेंट स्पीड का मतलब इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स कांस्टेंट, बट वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। अब वो चेंज किस तरह हो सकता है? इट कैन बी इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग। मतलब या तो ये होगा कि इनिशियली कार इज मूविंग विद अ स्लोअर स्पीड, आफ्टर सम टाइम्स स्पीड इज इंक्रीज्ड, सो इन दिस केस स्पीड विल इज कॉल्ड अ इंक्रीजिंग वेरिएबल स्पीड। सेम लाइक अगर इस तरह हो, previously car is moving with a faster speed, then after sometimes speed is reduced, again there is a change, so this change is called a variable decreasing speed। now this increasing and decreasing can further subdivided into different types। अब वो टाइप्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इट फॉर द इंक्रीजिंग। देखिए, इंक्रीजिंग स्पीड कैन बी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब ये है if speed is increasing at a constant rate। अब constant rate, what does that mean? just consider this example in which we are given the values for the time and distance। अगर आप इन टाइम और डिस्टेंस की वैल्यूज से स्पीड फाइंड करें जस्ट बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस विद द टाइम, तो देखिए जो वैल्यूज आपको स्पीड की मिल रही है दैट आर 2, 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स के इन एवरी 2 seconds speed is increasing by 1 meter per second। that means के speed is increasing and it is increasing at a constant rate। मतलब उसमें जो increasing का rate है that is fixed in every 2 seconds, it is having a increasing rate of 1 meters per second। so this speed is called a uniformly increasing speed। same way this increasing speed can be non uniformly increasing। अब non uniformly increasing का मतलब क्या है? if the speed increases at a variable rate, means just consider this example, again you are given the values for the distance and time। if you calculate speed from these values, you will have a different value of speed every time। that means के speed increase तो हो रही है, but it's not increasing at a constant rate, it's increasing at a variable rate। so if speed is increasing at a variable rate, so this speed is called a non uniformly increasing speed। now that same can be true for the decreasing speed। this decreasing speed can be uniformly decreasing or it can be non uniformly decreasing। uniformly decreasing means के speed अगर decrease हो रही है at a constant rate, so that decrease is called a uniform decreasing rate speed। अगर speed decrease हो रही है but at a variable rate, so that speed is called a non uniformly decreasing speed। so this is all about speed and its different types। now as we have completed speed, now we move to our next topic that is related to